Hello everyone, Vinita this side. I hope you all are fit and fine. So, after completing the reading of the chapter of the poem Rain on the Roof, now we are going to start. We actually, I just actually want to explain the all type of literary devices, all types of things that are actual in the poem. So, the poem from the Beehive, poem number 3, Rain on the Roof by Courts Kinney. Courts Kinney was the poet of this poem, and I hope some little bit part of the same have you discussed that we have discussed already in our previous video. So I think you have sure learned something. So nextly, we do have elements of poetry. What and which types of things that is very mandatory when we just start learning any poem and start knowing it in a better way. So elements of poetry, firstly theme. Theme is defined as a main idea or an underlying messages of a literary work which may be stated directly or indirectly. थीम जो है वो completely knowledgeable होना चाहिए, complete straightforward एक message होना चाहिए that the actually uh, discussed in the poem or chapter. So it may be stated directly भी हो सकता है और उसको indirectly भी बोल सकते हैं. Rhyme. A rhyme is a repetition of similar sounding words. We can say that rhyming words. तो similar sound के words उसमें होते हैं at the end of lines in the poems or song. Mood is the feeling created by the poet for the reader. Mood क्या होता है? वो feeling होती है जो poet है, जो poet create करता है, वो poet show करता है अपने behavior से, अपने शब्दों से. Figuring language. So in figuring language, we do have language that's intended to create an image. वो लैंग्वेज होती है जिसकी इंटेंडेड, जो कल्पना करती है टू क्रिएट एन इमेज, इमेज बनाती है, एसोसिएशन और अदर इफेक्ट इन द माइंड ऑफ द लिसनर or reader that goes beyond the literal meaning or expected use of the words involved. Figurative language वो लैंग्वेज होती है जो रीडर के माइंड में एक इमेज क्रिएट करती है, बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स कि पोएट जो एक्चुअली में एक्सप्लेन करना चाहता है ना, वो अपने शब्दों के माध्यम से उस बात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो वो अपनी फीलिंग्स के जरिए, अपनी फिगरेटिव लैंग्वेज के जरिए वो शो कर देता है कि वो एक्चुअल में पॉजिटिव मैनर में कुछ कहना चाहता है या नेगेटिव सेंस में कुछ कहना चाहता है. Nextly, if we just want to know, already we have discussed about Courts Kinney. Birthday November 24th, 1826 till January 25, 1904, and he was a American lawyer, politician, journalist, and poet as well. And The Rain on the Roof was the most of the famous poetry by the poet. Nextly, we have already discussed in that. When the sky is covered with dark clouds, it starts raining. जब भी बादल जो हैं वो घिर आते हैं काले बादलों से, तो क्या होता है? बारिश आनी शुरू हो जाती है. So have you ever listened to the patter of the rain roof, soft rain on the roof? क्या आपने कभी उसको सुना है? What thoughts flashed through your mind? आपके माइंड में एक्चुअल में क्या विचार जो है वो आते हैं?
As you hear this melody of nature, जब आप इस नेचर की मेलोडियस साउंड को सुनते हो, read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. पोएम को पढ़ो और बताओ कि एक्चुअल में पोएट किस चीज का सपना ले रहा है जब वो म्यूजिक सुन रहा है. म्यूजिक किस चीज का? रेन का. सो हियर वी डू हैव द पोएम. सो दीज आर द स्टेंजा. When the humid shadows hover over all the starry spheres, that we already discussed in our previous video. If you just want to learn, if you just want to understand these stanzas, kindly follow with the previous video. And the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into roof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers. Array, she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. So we have already discussed about what is the actual meaning, what is the actual description by the poet according to this poem. So in this stanza, when the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weaves into the tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the bed. Yes. So here in this, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So at the right hand side, we do have some words that we need to know with the complete meaning. Like humid means something which is full of moisture, and shadows refers to the moisture laden clouds which cast a shadow on the earth. Hover means mandrana, like move round something. Melancholy, sadness. Bliss, happiness. Patter, sound of raindrops falling on the roof. Cottage chamber, bedroom. So nextly, we do have the poet value points of the stanza, that the poet says that when the sky is full of the clouds, which are full of water and move around the sky, and the dark, sad darkness of the night is wiped off by the raindrops, which seem like tears falling from the sky. कभी कहता है कि when the skies, जब आसमान पूरा बादलों से घिर जाता है, जो पानी से भरे हुए बादल होते हैं, और वो जब सूरज आसमान में घूमते हैं, तो सैड डार्कनेस, उदासी से भरी हुई जो अंधेरी रात होती है ना, इज वाइप्ड ऑफ बाय द रेन ड्रॉप्स. बारिश की बूंदों से वो पानी से भर आती है, यानी कि वो उदास हो जाती है.
which seems like tears falling from the sky, जिसको देखकर लगता है कि जो आसमान है उससे जो है वो आंसू गिर कर आ रहे हैं. Actually, the poet is comparing raindrops to tears, and he says that the dark sky, which seems to be very sad, it appears as it is crying, and raindrops are the tears shed by it. अब यहाँ पर कवि जो है is used to compare raindrops to the tears. Raindrops को tears से compare कर रहा है, क्योंकि वो कहता है कि जब आसमान अंधेरा हो जाता है ना तो वो बहुत उदास दिखाई देता है, और जब वो उदास हो जाता है ना तो वो रोने लग जाता है, और जब वो रोता है ना तो उसके आंसू जो गिरते हैं वो बारिश के रूप में गिरते हैं धरती पे. He adds that it is like a blessing to lie on the bed. ये एक बहुत बड़ा सुकून, एक पीसफुल एनवायरनमेंट है, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मैं बेड पर लेटा हुआ हूँ इन हिज रूम, अपने कमरे में, एंड लिसन टू द साउंड मेड बाय रेन ड्रॉप्स, और उस आवाज को, उस साउंड को सुन रहा हूँ जो बिल्कुल भी छत पे पानी की बूंदों को गिरते हुए जो आवाजें सुनाई देती हैं. She used to listen the sound. Nextly, some literary devices from the same stanza. So visual imaginary. Imaginary means to use figurative. Yeah. So literary devices we do have. Okay. So according to the first, visual imaginary. Imaginary means to use figurative language to represent objects, actions, ideas in such a way that it appeals to our physical senses. इमेजिनरी का मतलब होता है फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज करना टू रिप्रेजेंट, दिखाने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स को, कुछ एक्शंस को, कुछ आइडियाज को इन सच अ वे, इस तरीके से दैट इट अपील्स टू आवर फिजिकल सेंसेस, कि वो हमारी जो एग्जैक्ट सेंस है ना उसको कंप्लीट, जो हम एक्शंस, जो हम आइडियाज एक्सप्रेस करना चाहते हैं ना और वो हम चाहकर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको वो हमें क्लैरिफाई करे, उसको बोलते हैं विजुअल इमेजिनेशन करना. लाइक इन द स्टेंजा वी डू हैव अ लाइन, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर. सो इट मींस, this is visual imagination. Nextly, alliteration. The repetition of a consonant sound in two or more consecutive words. उसको alliteration बोलते हैं. So in this stanza, we do have humid hover, steady spheres, press pillow, lie listening. Nextly, metonymy. So from the Greek language, change of name is a figure of speech in which the name of object or concept is replaced with the word suggested by the original as crown. क्राउन लगा दिया. अब क्राउन का मतलब होता है किंग, सो हमने क्या किया, उसका नेम जो है वो रिप्लेस कर दिया. सो इट मीन्स नाउ स्टेरी स्फेयर्स, बेसिकली प्लैनेट की बात हो रही है और यहाँ पे उसको नेम दे दिया स्टेरी स्फेयर्स का. सो इट मीन्स इट इज कॉल्ड अ मेटोनॉमी. I hope you will understand this. Nextly, so in next slide we do have something more interesting, something related to the literary device only from the first stanza. So onomatopoeia, the use of sound words, sound word that create from a dramatic effect or auditory imaginary, जो इमेजिनेशन से ही क्रिएट किया गया है उस साउंड वर्ड को, लाइक पट्टर, पटपट की आवाज निकालना, like it is the sound made by the raindrops falling on the rooftop, so it is called
also called a literary device. Personification, where we treat a non-living thing as a living being, like melancholy darkness, कि रात जो है वो अपने अंधेरे से उदास हो जाती है. इट मीन्स लिविंग बीइंग को नॉन लिविंग बीइंग से ट्रीट किया गया है. ठीक है, कि नाइट नॉन लिविंग थिंग है, बट उसको एक लिविंग बीइंग, जैसे इंसान जो है वो आंसू बहाते हैं अपने दुख होने पर, तो वैसे यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है. सो हियर इन दिस इन दीज लाइंस वी डू हैव पर्सोनिफिकेशन. सो डार्कनेस को पर्सोनिफाइड किया गया है क्योंकि उसको कहा गया है कि वो उदास है. डार्कनेस को ट्रांसफर्ड epithet, the use of an adjective with a noun when it refers to the another noun. एक adjective का use करना एक noun के साथ जबकि वो किसी और noun को दर्शाता है. Like melancholy darkness, the darkness is not melancholy, but it refers to the sad people. वो आया तो darkness के साथ हुआ है, लेकिन वो darkness के लिए नहीं दिखाया गया है, वो sad people के लिए दिखाया गया है. I hope you will understand this. Now we do have the second stanza. So in the second stanza we do have every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fences into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into roof as I listen to the patter of the rain upon the roof. So here from the right hand side we do have some words that we need to be understand. So tinkle means light ringing sound like bijli kadakna. Shingles means tiles which are usually used on the roofs. Echo, repeated sound. Roof, the thread. It is actually a thread, like we can say that wool also. Putter means sound of raindrops falling on the roof. And busy being refers to the human beings, and here the poet is referring to himself. I think you will understand. So according to that, what we had, value points according to the second stanza. He says that whenever he hears rain falling on the rooftop, वो कहता है कि वो जब भी बारिश की बूंदों को अपने छत पे गिरते हुए सुनता हूँ. The sound repeats in his heart. वो आवाज जो है ना वो बार बार रिपीट होती है, गूंजती है उसके दिल में. And in his dreams और उसके सपनों में he has many different fanciful imaginations. और उसके सपनों में बहुत अलग अलग तरह की और बहुत ही fanciful, बहुत ही कल्पनात्मक imagination है उसकी, कल्पना करने की शक्ति. It was really very strong and very difficult also. He adds that the sound of the rain falling on the rooftop creates many new different situations, many new different dreams in his mind. He adds that वो add करता है कि जो आवाज है, जो sound है rain falling का, creates many new different dreams. उसकी वजह से mind में बहुत नए नए विचार, बहुत नए नए स्वप्न जो है वो दिखाई देते हैं. He actually recollects many memories of the past which come back into his mind as dreams. उसने बहुत सारी यादें पिछली past की याद की जो actual में come back into his mind, उसके दिमाग में फिर से आए, उसके dreams में फिर से आए. So he says that as he listened to the patter of the rain on the roof, he has many new dreams in his mind. बहुत सारे dreams थे उसके mind में. And the memories of the past come back in the form of dreams. और जो यादें हैं अपने घर के रिलेटेड, अपनी मम्मा से रिलेटेड या अपने कलीग से रिलेटेड, अपने फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड, वो मेमोरीज पास्ट की दोबारा से उसके माइंड में ड्रीम्स की फॉर्म में जो है वो आ जाती है. So nextly we do have the literary devices from the stanza. So alliteration means the repetition of the consonant sound, as we already discussed in our previous stanza also.
So busy being and rain roof, these are electrician. Hyperbola, we can say that a figure of speech that uses extreme exaggeration to make a pilot or silent. Okay, so a figure of speech that uses extreme exaggeration to make a point और शो एम्पथाइजेस. ये फिगर ऑफ स्पीच है जो बहुत ही ज़्यादा दबाव लेकर किसी चीज़ को पॉइंट आउट करती है. लाइक एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फेंसेस एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस. अब हजारों की संख्या बता दी, यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना. हाइपरबोल मीन्स एग्जैगरेशन, मीन्स बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना कि हजारों की संख्या में कल्पनाएं, हजारों यादें. तो क्या ऐसा ही हुआ होगा? हजारों, यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है. So it means it is called hyperbole. Nextly, we do have the next one, personification. Again, treating of non-living beings with the living beings. Like weave their air threads into woof. Means the dreams and the recollections are personified as there, and recollection is personified when he says that they weave dreams. Nextly, transferred epithet, the use of an adjective with a noun when it refers to the another noun. Dreamy fences adjective के साथ यूज किया गया है, but fences are dreamy but refers to the people who had the dreams. I hope you will understand this. Onomatopoeia means sound like tinkle and pitter. These are the sounds. Okay, nextly, now in memory comes my mother. अब उसकी यादों में उसकी मम्मा आ जाती है. That we already discussed in the previous video. So here we do have some points. Era means old poetic word used for before. Dawn means daybreak, means दोपहर का समय या संध्या टाइम जिसको आप बोल सकते हो. List, old poetic word for listen. List का मतलब listen है. Refrain, a repeated part of a song or a poem. Hear the sound of the rain. Repeated part of song, गाना. So nextly, some value points. The poet introduces his mother here and says that he is dreaming of his mother. यहाँ पर जो poet है वो अपनी मम्मा को इंट्रोड्यूस कराता है और वो कहता है कि मेरी मम्मा जो है he is dreaming of, वो स्वप्न देख रहा है अपनी मदर का. The rain brings the memory of his mother who is no longer alive. अब बारिश से उसको अपनी मम्मा की याद आ गई है जो अभी जीवित नहीं है. In the past, she used to love him a lot. Past में वो उनसे बहुत प्यार करता था. She used to consider him a darling and she would let him sleep till daybreak and have sweet dreams. She used to consider him a darling and she would let him sleep till daybreak and have sweet dreams. मतलब वो याद कर रहे हैं जब उसकी मम्मा उसको सुलाया करती थी, स्वीट ड्रीम्स कहकर उसको बहुत अच्छे से ब्रेक करती थी, उसको बहुत अच्छे से फील कराती थी, उसको बहुत एहसास कराती थी कि नाउ इट्स टाइम टू स्लीप. So the poet can still feel that his mother is looking at him as he listens to the song made by the raindrops falling on the rooftop of his room. जो poet है वो आज भी सेम वही फील करता है that his mother is looking at him as he listened to the song. जब वो आज उस गाने को, उस म्यूजिक को दोबारा सुन रहा है छत पर बारिश की बूंदों को गिरते हुए, तो वो फिर से फील कर रहा है कि उसकी मम्मा जो है वो उसकी तरफ देख रहे हैं और शायद वही जो वो सॉन्ग है
जो वो है हमारे लिए गा रहे हैं। एंड तब उसको वो सुनकर बहुत बिल्कुल स्लीपी फील होता है। द साउंड ऑफ द रेन मेक्स हिम कोरिलेट हिज पास्ट विद हिज प्रेजेंट। जो साउंड है रेन का वो कोरिलेट करने में हेल्प कर रहा है उसके पास्ट को उसके प्रेजेंट से। मीन्स टू से his childhood with his present. So that is why the poet is moved by the sound of the rain drops on the shingles of his room. इसका मतलब है that's why the poet is moved by the sound of rain drops. इसलिए जो है पोइट हमेशा वो पसंद करता है उन आवाजों को जो उनकी टाइल्स पे कमरे की टाइल्स पे गिरती हुई आवाज जो उसको सुनाई दे रही है। Whenever he hears this sound, it brings back memories of his mother. जब वो सुनता है तो उसको लगता है कि वो अपने पास्ट की यादों में है एंड ही इज रिमाइंडेड टू हिज मदर और वो अपनी मम्मा को याद कर रहा है। So here in this stanza we do have only two figure of speech alliteration like memory my mother and darling dreamers and the sound है यहाँ पर putter. So putter is a onomatopoeia. I hope you will understand. Nextly we do have in next slide we do have setting and mood. The poet is lying comfortably, snug in his bed. अपने बेड पर पसर कर वो comfortably लेटा हुआ है. With his head pressed against the pillow और उसने प्रेस किया हुआ अपने सिर मतलब उसने सिर के नीचे तकिया रखा हुआ है. In a room in his cottage मतलब कमरे में है अपने बेडरूम में है and listening to the patter of the soft rain as it falls on the shingles of the roof. तो वो सुन रहा है उस पटर को जो रेन जो सॉफ्ट रेन है जो बारिश की बूंदें हैं जो उसके छत पर टाइल्स पे गिर रही हैं। So what is the mood? The rain brings the past memories of the poet's childhood. In this poem, actually, the rain brings the poet in a good mood that he remembered the past memories from his childhood and makes him little bit sad at times when he remembered his mother. जब अपनी मम्मा को याद करता है तो उसको थोड़े टाइम के लिए बहुत सैड भी कर देती हैं वो मेमोरीज लेकिन वो याद कर रहा है पिछली बातें that was interconnecting that was correlate with the present and the past that is used to make a bridge between present and the past between his now age and the childhood. I hope you will understand it. Nextly, what is the theme of the poem? The theme of the poem, as we already discussed in the introduction part, like healing power of rain, the musical sound of raindrops falling on the rooftop at night has the ability to revive sweet memories and refuse fences in the otherwise busy mind. The rain first soothes and comforts an overworked mind by taking it back to its lovely past. And some of our best memories in life are associated with rain. It happens with everyone because everyone had a special moment, special memories that is interconnected with the past and present also. So, the theme of the poem is actually the healing power of the rain. हीलिंग मीन्स जख्म को यादों को ताजा कर देना या उसको सुखा देना कि उसको मतलब ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जो फील करता है ना उसको हीलिंग मिल रही है बारिश की मतलब उसको सुकून मिल रहा है। अब वो बारिश की आवाजों को सुन रहा है बट ही इज इन अ हीलिंग पावर मतलब वो उसको सुकून दे रही है क्योंकि वैसे तो हम बहुत बिजी होते हैं बट रेनी सीजन का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हम अपने बिजी रूटीन को छोड़कर एक रिलैक्सेशन पे भी आ जाते हैं। यूजुअली पीपल क्या करते हैं कि बारिश आ रही है मौसम बहुत अच्छा है फैमिली टाइम बैठते हैं चाय पीते हैं चाय पकौड़े खाते हैं सो दीज आर द फैमिली टाइम इट मीन्स दीज आर हीलिंग पावर ऑफ द रेन। So what is the message? The message of the poem Rain on the Roof is that nature has significant effort, significant effect on humans. मैसेज है पोम का कि जो रेन ऑन द रूफ है ना वो एक नेचुरल हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन ह्यूमंस कि नेचर का
ह्यूमन लाइफ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है. द फॉलिंग ऑफ रेन अफेक्ट्स द इमोशंस ऑफ द पॉम. अब बारिश की बूंदें जैसे जैसे गिर रही है ना, वैसे वैसे पोइट के जो इमोशंस है ना वो चेंज हो रहे हैं. कभी वो फील कर रहा है कि जो रात है वो बहुत मेलनकली है, सैड है. कभी वो ये फील कर रहा है कि मुझे बहुत ब्लिसफुल महसूस हो रहा है. कभी वो महसूस कर रहा है इट वॉज वेरी कंफर्टेबल. और फिर वो कह रहा है कि मुझे अपनी मम्मा की याद आ रही है. सो इट मीन्स द मूड, द फीलिंग्स, द इमोशंस ऑफ द पोएट इज चेंज्ड time to time, and he begins to memorize his past, especially his mother and her love. In a way, the rain heals the poet's inner self as it heals the earth. The poet feels bliss while listening to the sound of the rain. It means the poet feels bliss. It was a very special moment for poet when he felt really very comfortable and a peaceful environment while listening to the sound of rain. Nextly, we do have the next slide. In that, we do have a summary. The poem Rain on the Roof talks about the poet's varied reaction to the sound of the raindrops falling on the roof of his house. Actually, in this complete poem, the poet is actually talk about his varied reaction, which he had given in the three different stanza. He says that the raindrops at night are like tears shed by the sad dark night. He loves to lie in bed and hear rain falling on the roof of his room because it gets back sweet memories of the past. He says that the sound of raindrops help him fall asleep and gives him sweet dreams. उसको सोने में बहुत हेल्पफुल है. It was really a very blissful, very comfortable, very peaceful environment. So he has memories of his loving mother who would put them to sleep. इसमें उसकी मदर की याद भी उसको आ जाती है जो हमेशा उसको हेल्प करती थी सोने में. तो जब उसकी याद आती है ना तो उसको लगता है कि हाँ आज भी वो मेरे लिए वही गाना वही लोरी सुना रहे हैं जो बारिश की बूंदें प्रोड्यूस कर रही हैं. और वो भी यही चाहते हैं कि मैं सो जाऊं. So thank you. Have a nice day.